Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the seventh lecture of this series of Indian Constitution. So we have completed the topic basic structure in the previous lecture, and we had seen that the principles underlying like social justice, equity, they are not parallel to each other, but they are intertwined with each other. If we disturb one, then it will also affect the others. So our next topic is the relationship or the distinction between fundamental rights, DPSP and fundamental duties. This also comes in the UP mains. So इसमें से एक example हमने previously भी देखा था that if a person is having a right, where for instance for fundamental right, if a person is having a right and when we are talking about the DPSP, it is the larger purpose. For example, a student or some students are gathering into a class or in a college or a school, but they are for a larger purpose. For what purpose? Whatever standard or whatever degree for which they are pursuing to achieve that degree, to pass their exams and to got that degree. But if the gathering is of such kind that you could gather in a school or a class, but there is not a larger purpose, ultimate purpose that to pass a particular class or particular degree or particular course, then it is meaningless purpose. So that right तो मिल गया उनको that to gather and to study, but that right is without any purpose, larger goal. So that is larger purpose is the DPSP. Similarly, if a person is having right and the persons are gathering into a class or a place and he is enjoying his rights, but he is disturbing on other rights. So it is the duty of that person to not to disturb on others' rights so that the other person could also peacefully enjoy their rights. So when we talk about that, then it would be called the fundamental duties. So when a person is gathering at a gathering place and for a larger purpose, and the larger purpose is defeated because he is enjoying his right, but he is affecting the rights of other persons by disturbing. So should not we impose the duty upon him? So that duty is called the fundamental duties. Similarly, there are duties in the constitution on every citizen, and the larger purpose is the DPSP, and the right we got naturally is the fundamental right. जब हम jurisprudential एस्पेक्ट से देखते हैं कि अगर मेरे पास राइट है तो आपके पास ड्यूटी है, बट यहाँ पर क्या है, मेरे पास राइट है और मेरे पास ही ड्यूटी है, मेरी ये भी ड्यूटी है कि मैं दूसरों के राइट्स को अफेक्ट ना करूं. I have got a fundamental right. You are having a corresponding duty. You can be a state, you can be individual. You have got a corresponding duty. So that is the right duty correlative. But I have also got the fundamental right, and you also got the fundamental right. And if you have got the fundamental right, then I will also having the fundamental duty, correlative duty or not. सो रिलेशन इस तरीके से बनता है, मेरा फंडामेंटल राइट आप सबकी ड्यूटी और आप सबका फंडामेंटल राइट मेरी ड्यूटी, आप में से हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट हर दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी. सो इन वन वे एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग द फंडामेंटल राइट एंड every individual, because of the corresponding fundamental right of the others, he also has the duty. क्योंकि आपके पास भी वही राइट है जो मेरे पास है, तो जब आपके राइट के लिए मेरी ड्यूटी है तो मेरी ड्यूटी मेरे राइट के लिए आपकी ड्यूटी भी तो होगी. सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज एंड राइट existence in the various individuals, and otherwise also there are larger goals in the form of DPSP. There are fundamental rights guaranteed. Now will you be attained those larger goals, or will you be able to enjoy those fundamental rights until certain basic duties are fulfilled by all of us?
For example, जैसे every person is having the fundamental right to get the water supply, electricity, all these, then should not it be the duty of that person to not to waste the electricity or water supply unnecessarily, so that the other peoples who are deprived of these rights, they also attain that right. When we are talking about similarly that we have right to get the clean environment, pollution free environment, there should not be any polythene bags, bottles in our surroundings. So when we get this right, then we also have a duty along with it that while we are doing our day to day life or traveling here and there, then do not throw any pollution uh, things, polluting things like bottle, polythene, etc., etc. So your rights will be given a meaningful purpose, or you will enjoy your rights only if the other citizens will do their duties, and the other persons also fu- enjoy their fundamental rights when you fulfill your duty. Similarly, when a person is having a right in a polluted city to get the fresh air, green environment, so there must be plantation. There are several plants to get the air unpolluted. And in several areas, there are unauthorized constructions and deforestation. They are cutting the plants and it will ultimately polluting the environment. So when we are having that right to get the fresh air, pollution free air, then there also we are having the duty to not to construct the unauthorized constructions. So these ideas are the relationships between the FR's fundamental rights and fundamental duties. And keep remember also that ये खाली FR fundamental duties पे ही नहीं बनती, बल्कि DPSP और fundamental duties पे भी बनती है. Because DPSP is the positive rights and fundamental rights are the negative rights. DPSP भी हमारे राइट हैं और फंडामेंटल राइट्स भी हमारे राइट हैं, लेकिन DPSP लार्जर गोल्स हैं, पॉजिटिव राइट्स भी हैं लेकिन लार्जर गोल्स भी हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज इन दोनों राइट्स के साथ करस्पॉन्डेंट कर रहा है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई नेशनल फ्लैग है तो आपके पास राइट है टू हैव द नेशनल फ्लैग ऑन द बिग पोल ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर. But along with that right, you are also having the fundamental duty to keep making sure that the flag would be neat and clean. And with other duties, half march वगैरह पे, provided that all these things, तो ये भी आपको follow करना पड़ेगा उसके साथ. If we look apparently FR and DPSP, we see that they are in conflicting positions. Why? Because of a problem that one is enforceable but other is not. FRs are enforceable but DPSP are not. States should make laws upon it and then enforce them. They are not directly enforceable. So it would appear that one is more important and other is less important. Is it so? So we had already seen that Article 37. The answer is no, because Article 37 clearly says that DPSP are not enforceable, but at the same time it will say that it is fundamental in the governance and the state shall ensure that in the lawmaking it shall implement the DPSP. अब स्टेट को ये कौन बोल रहा है करने के लिए? उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37. जो आर्टिकल ये कह रहा है इट इज नॉट एनफोर्सेबल, वही आर्टिकल ये कह रहा है दैट दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस एंड स्टेट शैल एंश्योर दैट दी DPSPs आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लॉज. सो एक्चुअली DPSP आर नॉट lesser in nature. They are also as equally important as the fundamental rights. The only difference is that the DPSP are not make
directly enforceable. So as a citizen, a person go to the court to enforce a fundamental right. A person cannot go to the court to enforce the DPSP as the fundamental rights can be enforced. जैसे हम किसी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, वैसे हम डीपीएसपी को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते. बट इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट कि वो उस पर लॉ बनाए, जो सूटेड लॉ है उसके हिसाब से उस पर लॉ बनाए, और तब जब लॉ बन जाता है उस लॉ को एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो. अगर बने हुए लॉ को कोई वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो. लेकिन जब तक डीपीएसपी के लिए उस डीपीएसपी के लिए लॉ नहीं बनाया है तब तक आप उसको डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते हो. अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का. क्या हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करो? वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट डायरेक्टली टू एनफोर्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड because it is not directly enforceable. If I will go to the court today कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करो, the court will not listen to me because it is not enforceable. Suppose a Muslim lady goes to the court for taking a divorce from her husband. अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो लेडीज को डिवोर्स के लिए बहुत लिमिटेड राइट दे रखा है फ्रॉम टेकिंग डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड. And if a lady goes to the court for taking divorce on the ground of cruelty, she will get it. Why? Because the state has made a law, but वो तो पुराना law है 1939 Muslim Marriage Act, Muslim Resolution और Dissolution Marriage Act. उस law के अंडर she has given right, and that is one move towards the uniform civil code. सिमिलरली एक केस है शबनम हाशमी वर्सेस इमरान खान एडॉप्शन के लिए. फैमिली लॉ में पढ़ेंगे हम ये. अब शबनम हाशमी जजमेंट में क्लियरली बोला है दैट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर एक मुस्लिम भी बच्चा एडॉप्ट कर सकता है, दो द मुस्लिम पर्सनल लॉ डज नॉट अलाउड. बट अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट द मुस्लिम इज हैविंग द प्रेफरेंस to adopt a child. So what is it? Since there is a law, we can enforce it. But अगर ये law नहीं होता, under the personal law, a Muslim cannot adopt a child, because in the Shariat law you cannot adopt a child. A Muslim cannot adopt a child unless you make a declaration of that kind under section 3 of the Shariat Act. तो यहाँ पर ये सब है कि हम law बनाकर कर सकते हैं, हम otherwise नहीं कर सकते. मतलब क्या है कि लॉ है, अगर लॉ है तो लॉ एनफोर्स हो सकता है. स्टेट की ड्यूटी है कि इन डीपीएसपीज को लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट करे, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लॉज के थ्रू इम्प्लीमेंट करे. और धीरे धीरे सिंस इट इज ए रिलीजियस मैटर एंड वेरी वनरेबल मैटर, सो वी कैन नॉट डन इट एज फास्ट एज वी हैव इम्प्लीमेंट द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी, a matter of animal husbandry and so forth. Uniform Civil Code is Article 44. So we are, even though we are slowest, but does not mean that we are not gradually moving towards Uniform Civil Code. अब हो सकता है Uniform Civil Code में टाइम लग जाए, but slowly we are moving in that direction. जैसे जैसे लॉ बनता जाएगा आप उसको एनफोर्स कर सकते हो, लेकिन लॉ अगर है then it is protected and you can go to the court. डीपीएसपी में ये लिखा है फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली आर्टिकल 32 में लिखा है दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स डायरेक्टली बाय मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. तो फंडामेंटल राइट डायरेक्टली एनफोर्स करे जा सकते हैं हमारे डायरेक्टली मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट, पर डीपीएसपी कांट, दे कैन नॉट डायरेक्टली बी एनफोर्स्ड, बट आफ्टर मेकिंग द लॉ कैन बी एनफोर्स्ड. सो डिफरेंस बिटवीन द डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का ये है कि डीपीएसपी ज़्यादातर नेगेटिव काइंड ऑफ राइट्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी इज लेस इम्पोर्टेंट देन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट दे आर बोथ इक्वली इम्पोर्टेंट. सॉरी, द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर ज़्यादातर हैं जो नेगेटिव काइंड्स ऑफ राइट्स हैं. द स्टेट कैन नॉट डू दिस, कुछ को छोड़ दो,
कुछ पॉजिटिव वहाँ पे भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव. द स्टेट shall not do this, so the violation of the fundamental rights of the citizens. State shall ensure that two persons should be treated equally. State shall ensure that no person life and personal liberty should be deprived. तो इस काइंड के फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर नेगेटिव. सो व्हाट इज दैट? आपको कुछ करने से रोकना आसान है क्योंकि इसके लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती. जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को जॉब पे रखा जाए और उससे बोल दिया जाए कि आप अपना कार्य नहीं करोगे, दैट वुड बी मोर इजी देन ऑफ सेइंग दैट यू विल डू योर जॉब. सो सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं, किसी स्कूल में या कॉलेज में अगर हम जाते हैं और एम्प्लॉयड है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, और उससे बोल दिया जाए कि यू विल नॉट टीच फ्रॉम टुमारो, दैट वुड बी नेगेटिव. तो दैट विल मोर सिंपलियर. अब उससे बोल दिया जाए कि दैट तुम ही स्टूडेंट्स को डिग्री दोगे बाय योर सोर्स फ्रॉम टुमारो, तो उसको कॉलेज बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, एफिलिएशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इज एलिजिबल टू डू दैट. फिर उसके बाद टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे. सो ही रिक्वायर्ड मोर एंड मोर रिसोर्सेज. सो वो करना मुश्किल है, लेकिन उसी टीचर से जो कहा जाए कि नहीं पढ़ाओ, दैट इज इजी. सो सिमिलरली स्टेट के लिए फंडामेंटल राइट सिक्योर करना आसान है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट shall not discriminate, state shall not deprive of fundamental right of life and personal liberty. The state shall not impose any religion upon anyone. तो जहाँ भी restrictive rights हैं, it is easy to attain that because you are guaranteeing that just by refraining yourself. लेकिन जहाँ पर भी positive rights हैं, for example, the states should ensure that there should be an equal distribution of wealth. The state shall ensure the uniform civil code. The state shall ensure that there should be livelihood with everyone. The state should ensure there should be good maternity conditions for women and so forth. So for these purposes, the state require resources. Resources not only in the sense of material resources, it may be human resources, human willingness also. फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको कोई और रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बट यू नीड द विलिंगनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. वाई? बिकॉज देयर आर डिफरेंट रिलीजन इन द कंट्री एंड लार्जर number of people are there in large group. It is difficult to attain because of their different cultures. क्योंकि अगर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल अगर हो गया DPSP, तो देयर आर सेवरल पीपल्स जो उनका वो पिटीशन डालते ही रहेंगे एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम. अब उस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है और वो पिटीशन फाइल कर रहे हैं, कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया दैट यू शुड इम्प्लीमेंट देम. स्टेट बोलेगी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम क्या करें. Now there are several persons, citizens, they want uniform civil code, और वो कोर्ट में चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में टू एनफोर्स दैट. सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे दैट द स्टेट मस्ट एनफोर्स, इट इज पॉसिबल. अब सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया तो अब स्टेट के सामने डिफिकल्टी हो गई. बिकॉज डिफिकल्टी वाई? बिकॉज देयर आर several groups in India of different religion and different customs, so there are chances of to get the communal rights in India. So it is very much difficult to control the situation if the communal rights arose all of a sudden. So when the resources are not there with the state, possibility is less. And at the time of independence, the possibility of having resources is less, so we have not made them legally enforceable at that time, because that would be very detrimental to the effectiveness of the constitution. But we also have to understood that these are the rights. For example, that right related to education, right related to working conditions, the right related to wages, livelihood से related,
the right related to women, the rights related to child labor, the right related to agriculture and animal husbandry. You talk about the equal distribution of wealth. So since these are the larger goals of the freedom struggle, these are the larger goals of socio-economic revolution. So one of them is socio-economic revolution also, because we have to achieve the socio-economic revolution. So we get the political freedom first, because that could not be achieved under the Britishers. So ये हमारे लार्जर गोल्स हैं जो सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम, रिलीजियस सोशो इकोनॉमिक गोल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलीजियस से रिलेटेड है, ये अल्टीमेट गोल्स हैं. जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्टली, जो फर्स्ट मोस्ट था, दैट इज सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन. और उसी को अचीव करने के लिए वी हैव गॉट द फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम. ब्रिटिशर्स को हटा दो, बिकॉज द सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम वी वुड नॉट अचीव अंडर देम. तो इसको अचीव करने के लिए हमने पॉलिटिकल फ्रीडम गेट की थी. वी गेट द पॉलिटिकल फ्रीडम फर्स्ट. सो वी हैव रियलाइज्ड दैट at that time only the socio-economic freedom is only the main purpose, and removing of the Britishers is the only gateway to attain the socio-economic freedom. So our visualization is socio-economic freedom, and the political freedom is the only one thing that we have demanded, and that is guaranteed through the fundamental rights. लेकिन सोशो इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, which was the main demand before the freedom struggle, before achieving the freedom in the freedom struggle, and it should be, has to be guaranteed in the constitution in the larger longer run. It cannot be guaranteed by the state just by refraining to doing something. It is guaranteed by the state by doing something positive. So for that, the state has to do something positive, and for that you need some circumstances. So अगर उसको हम पहले ही शुरू में ही डिक्लेयर कर देते तो एनफोर्स तो कर नहीं पाते, हमारा सोशो इकोनॉमिक लार्जर गोल डिफीट हो जाता. और वैसे भी सोशो इकोनॉमिक जो लार्जर गोल है, तो वो लार्जर रन में ही तो सेटिस्फाई हो पाएंगे. सो देयरफॉर दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड देम टू बी एनफोर्सेबल. They are enforceable only when the resources are there, and that is possible only through law. So धीरे धीरे we are gradually shifting towards DPSP, making them enforceable. For example, let's take the education. एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं. आर्टिकल 45 में दे रखा है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू children below the age of 6 years, and it is also given in article 41. So they are talking about education in article 41 and 45, and they are DPSP. They are both DPSP. अब उन्होंने क्या किया? Now we find that without the education being made the fundamental, जब तक हम एजुकेशन को फंडामेंटल नहीं बनाए, the larger purpose of the society, the larger purpose of equality, social justice, etc., they will not be attained. And now we are having sources to provide the education to the children. Therefore, not it is the right time to declare the DPSP as a fundamental right. इसी वजह से आर्टिकल 21A में the right to education is a fundamental right. सो इसी वजह से जो राइट हमारा पहले DPSP था, पॉजिटिव राइट के फॉर्म में नॉन एनफोर्सेबल था, उसको अब हमने, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस अब ऐसे हो गए हैं, उसको हमने फंडामेंटल राइट बनाया कि नहीं बनाया. उसी प्रकार से जब हम आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में जाते हैं, तो इसका क्लाउज ए के फॉर कर्नाटका हम देखते हैं. सो इट इज पुट हियर ऑल्सो राइट टू एजुकेशन. So right to education is one right which is DPSP also, which is fundamental right also, and which is fundamental duty also. So these are DPSP. It is not gradually enforceable
जैसे जैसे सिचुएशन उस लायक होती जाती है वी मेक देम एनफोर्सेबल। जैसे हम आर्टिकल 14 के अंदर बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देयर आर सेवरल जजमेंट्स which says that in article 14 it is implicit that equal pay for equal work is a part of fundamental right। और यही चीज हमको मिलती है 39D DPSP में, that is equal pay for equal work। अब how could the Supreme Court declare that to be a fundamental right? Because we have the resources and we can guarantee that equal pay for equal work। अब राइट टू लाइवलीहुड को हमने एक्चुअल फंडामेंटल राइट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ोगे तो इन आर्टिकल 21 इट इज एम्प्लॉयड फंडामेंटल राइट, लेकिन राइट टू लाइवलीहुड आपका डीपीएसपी है कि नहीं। सो डीपीएसपी आर द लार्जर गोल्स, दे नीडेड रिसोर्सेज एंड देयरफॉर we are not having all the resources and circumstances, we cannot make them enforceable all of sudden। But as and when we are progressing and we are finding resources, then either we, by making laws and implementing them, or also in some cases we are declaring that particular DPSP in the part of the fundamental rights also। And once we are declaring that DPSP in the part of the fundamental rights, it becomes enforceable। So DPSP फ्रीडम स्ट्रगल के समय हमारे पॉजिटिव डिमांड्स थे, पॉजिटिव राइट्स थे, और फंडामेंटल राइट्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय नेगेटिव राइट्स, नेगेटिव डिमांड्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जस्ट पॉवर्टी हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, तो उस समय हमारे दो राइट बनाए गए। जैसे डीपीएसपी में अगर राइट टू लाइवलीहुड डाल दिया जाता है तो फंडामेंटल राइट भी एक अपने आप होता है कि आपको ये नहीं करना, रेस्ट्रेन किया जाता है कि डीपीएसपी लार्जर पर्पज है, वो रिसोर्सेज होगा तब इम्प्लीमेंट होगा। हम लाइवलीहुड नहीं दे पा रहे हैं तो वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लार्जर गोल है, वो बाद में पूरी हो जाएगी। बट नेगेटिव, अगर किसी के पास लाइवलीहुड है, कोई कमा रहा है, तो स्टेट की यह ड्यूटी है फंडामेंटल राइट के फॉर्म में नेगेटिवली वो इम्प्लीमेंट होगा कि स्टेट ये नहीं कर सकता, उससे उसके रोजी का साधन नहीं छीन सकता। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होता था दैट इंग्लिश पर्सन्स जो अंग्रेज आते थे जबरदस्ती छीन लेते, दैट काइंड ऑफ क्रूअल्टी। तो स्टेट को रिफ्रेन किया गया कि आप ये नहीं कर सकते, आप किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते तो उससे छीन भी नहीं सकते, जो कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स होता था। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। व्हाट हैपेंड वाज, जो आपका 25th अमेंडमेंट था केशवनंद भारती केस में, उसमें 31C ऐड कर दिया। बाय द 25th अमेंडमेंट दे हैव एडेड द 31C इन द कॉन्स्टिट्यूशन, and as per 31C, any law which has been made for the purpose of Article 39B and C of the Constitution, that is the equal distribution of wealth, shall not be unconstitutional only because it violates the Article 14 and 19। Means कोई भी law जो 39B और C के लिए बनाया गया है वो सिर्फ इस वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा कि वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर रहा है। अब ये उसी सीक्वेंस में था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वगैरह। अब कोर्ट के पास सवाल यहाँ पर ये था केशवनंद भारती केस में, इज दिस अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड टू फॉर सुपीरियरिटी। 39B एंड C को सुपीरियरिटी देता है ओवर द फंडामेंटल राइट्स, whereas Article 37 clearly says that the DPSP are not enforceable। तो जब Constitution clearly कह रहा है that the DPSP are not enforceable, so how can you amend and declare that the DPSP are not only enforceable, they are also superior to certain fundamental rights। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कहते हैं DPSP आर नॉट एनफोर्सेबल तो इसका मतलब ये नहीं है दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दे ऑल्सो हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, DPSP ऑल्सो हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। द ओनली प्रॉब्लम इज द रिसोर्सेज
and we cannot read conflict between the DPSP and the fundamental rights. They are both the two sides of the same coin. They are both the two sides of the same coin. The fundamental right are the one which are the path on which you have to move. अगर fundamental rights को हम एक river का example लें, that river is moving, that are the fundamental right, that river is fundamental right, then the DPSP are the two banks of the river, which will decide that where has the fundamental right has to go. So they are not at all in conflict. So उस तरीके से अगर हम देखें तो they are not in conflict with each other. अब suppose in implementing a particular DPSP, you find that there is a immutable conflict between the DPSP and some fundamental right, then as a matter of policy, you have to see that the encroachment of which of there is more important. अब इधर जो एग्जाम्पल हमने लिया था राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में और 39B और C में कन्फ्लिक्ट हो रहा था. राइट टू प्रॉपर्टी कहता था कि हम आपकी प्रॉपर्टी को कर्टेल नहीं कर सकते, और 39B और C क्या कहता है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करोगे. सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बेटर कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी इंडिविजुअल जस्टिस के लिए ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की, 39B और C इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट टू प्रॉपर्टी तो खाली इंडिविजुअल जस्टिस के लिए ठीक है, लेकिन जब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात आती है तो 39BC को ही प्रेफर करेंगे. सो हियर द सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट. सो टू दैट एक्सटेंट यू आर कर्टेलिंग, अगर हम उस एक्सटेंट तक कर्टेल करते हैं, इफ यू आर कर्टेलिंग टू दैट एक्सटेंट आर्टिकल 19 and 14 to that limited extent, so actually you are doing the balancing between the two as of today in the present circumstances, because without that the progressive movement of the state is not possible and therefore the amendment is constitutional. लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने, 42nd अमेंडमेंट करके इन्होंने एक जनरल सा अमेंडमेंट कर दिया 31C में और लिख दिया that no law which is made for the purpose of any DPSP, any law which is made for implementing any DPSP merely because it violates Article 14 and 19. सिर्फ 39B and C में अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है दैट तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा. सो पहले बात थी हमारी 39B and C के लिए. नाउ आफ्टर दिस अमेंडमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी DPSP, एनी लॉ. तो कोई भी किसी भी DPSP के लिए अगर लॉ बनाया जाता है सिर्फ इस वजह से दैट इट वुड कन्फ्लिक्ट 14 and 19, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा. तो अब जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी DPSP के लिए, व्हेन वी आर सेइंग एनी DPSP, so are we not reading direct conflict between all DPSP and fundamental rights? But essentially DPSP and fundamental rights and there should be a balance. दोनों में conflict नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि conflict कभी नहीं होगा, क्योंकि DPSP को जब प्रमोट करते हो तो कहीं ना कहीं किसी fundamental right में उसका encroachment होगा और उसको particular extent तक curtail करना पड़ सकता है. लेकिन ये कह देना कि किसी भी DPSP के लिए कोई भी लॉ बनाओगे और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो दैट लॉ विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अगर आप ऐसा कहते हो देन इसका मतलब यू आर रीडिंग द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल द DPSP एंड फंडामेंटल राइट, एंड दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग. इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग नहीं मानेंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्टिपुलेट ए conflict between the two. Constitution stipulate an encroachment in certain cases, and that can be harmonized by giving an overriding position to one over the other as and when the circumstances required. लेकिन अगर आप सभी DPSP को फंडामेंटल राइट के ऊपर ओवरराइडिंग पोजीशन देते हो, then that is unconstitutional. That is what constitutional thinking. And therefore in Manka Gandhi case, in the Minerva Mills case, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया in 1980, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया मिनर्वा मिल्स केस में, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली says that that's a 42nd amendment which is amended 31C and given superiority over all the fundamental rights.
all the DPSP over the fundamental rights. इस अमेंडमेंट के थ्रू सारे DPSP को सुपीरियरिटी दी गई है ओवर द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. केशवनंद भारती में भी इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज actually in that it was finding since from the implementation of the constitution के time से there was experience right away from the Bihar Land Reform Act. There was an experience that the right to property become a hurdle in achieving the economic justice etc. And therefore to that extent the restraint was essential. But इसका मतलब ये नहीं है कि if you are saying that generally all the DPSP are important than fundamental rights. तो हम ये नहीं कह सकते कि जनरली मात्र इस वजह से कि वो राइट टू प्रॉपर्टी वाले केस की वजह से कि सारे DPSP इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. बिकॉज जब तक आप कन्फ्लिक्ट नहीं देखोगे और जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट में, तब तक आप किसी एक को सुपीरियरिटी अदर पर कैसे दे सकते हो. सो अगर आप ये कह देते हैं कि किसी भी DPSP के लिए कोई भी लॉ अगर आप बनाते हैं तो वो फंडामेंटल राइट के ऊपर सुपीरियर होगा, तो इस केस में कॉन्फ्लिक्ट तो आपको दिखाना ही और पहले ही आपने सुपीरियरिटी दे दी, क्योंकि हर DPSP और फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं. देयरफॉर द कोर्ट हेल्ड दैट दिस अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और इन्हीं केसेस में सुप्रीम कोर्ट टॉक्स अबाउट द हार्मनी बिटवीन द DPSP एंड द फंडामेंटल राइट्स is also a part of the basic structure, and that is the essential matter of the constitution. Unless there is DPSP, the fundamental rights become useless, and unless there is a fundamental right, the DPSP becomes unattainable. So दोनों एक दूसरे के लिए complementary and जरूरी हैं. एक पॉजिटिव राइट है एंड एक नेगेटिव राइट है, और दोनों को एक साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स अटेन कर सकते हो. सो राइट डाउन both the fundamental rights and DPSP are rights of the individuals, and they are both two sides of the same coin. The fundamental rights are generally negative rights, except that some of them, like Article 15, generally negative rights which aim at pulling a restriction upon the powers of state. तो जनरली हमारे नेगेटिव राइट्स हैं, लाइक हमारा आर्टिकल 15 है, अदर राइट्स हैं विच आर नेगेटिव, जो रेस्ट्रिक्शन पुट करते हैं, एम्स एट पुटिंग ए रेस्ट्रिक्शन अपॉन द पावर्स ऑफ स्टेट, वेयर एज DPSP एज ए पॉजिटिव राइट्स which put a positive duty upon states to attain certain goals for the individuals, and these goals are also the positive demands of the individuals, and therefore these positive rights are positive rights, and these are positive guarantees of constitution for the individuals. However, the basic difference between two is that for fundamental rights, the state needs to refrain from doing certain acts, whereas for DPSP, the state needs to do some positive acts or play a proactive role, which requires the availability of circumstances and resources for DPSP. A positive degree of prudence wisdom is expected from the state. Now next paragraph. Both the fundamental rights and DPSP are indispensable. Without the DPSP, without the larger goals, the fundamental rights will become meaningless, and the larger goals in the form of DPSP cannot
be attained unless the fundamental rights are guaranteed. These two are complementary to each other, and one cannot do without the other. However, only fundamental rights are expressively been declared enforceable, and not the DPSP, the reason being the non availability of resources to implement the DPSP. Full stop. Nevertheless, sentence. Nevertheless, the DPSP have been declared in Article 37 to be fundamental in governance, and the state is constitutionally duty bound to implement the DPSP in making of the laws. Thus, it cannot be said that constitutionally DPSP are less important than fundamental rights merely because they are not declared to be enforceable. So, in making laws, it cannot be said that constitutionally DPSP are less important than fundamental rights merely because they are declared to be enforceable. Now, next paragraph, write down the case. In case of Nand Bharti case, citation पूरी already लिख रखी है हमने. In case of Nand Bharti case, while interpreting the constitutionality of 25th Amendment, the Supreme Court held that in the cases of individual conflict between a particular DPSP and fundamental right, a balance can be drawn in the larger interest of the society, and fundamental rights can be restricted to a limited extent. Particularly in a welfare state like India, such a curtailment of the fundamental right to property for promoting equal distribution of wealth and economic justice would be justified. The harmony between DPSP and fundamental rights from the bedrock means chattan, from the bedrock of rock of the Constitution, Indian Constitution, and it is the part of the basic structure of the Constitution. Now, one general point I have to ask, whether Article 13 would apply on personal laws or not. Is Article 13 applicable on personal laws? अब आर्टिकल 13 के दो पार्ट्स हैं. एक तो क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट वुड अप्लाई, बट जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके लिए ये लिखा है ना, द स्टेट शैल नॉट मेक अ लॉ. सो वेन एवर द स्टेट मेक्स अ लॉ इट शुड नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट. इसलिए 13 क्लॉज 2 में पर्सनल लॉ नहीं आएगा, 13 क्लॉज 1 में पर्सनल लॉ भी आएगा. So personal laws also cannot be violated. The state cannot interfere because of the religious reasons. Otherwise, the personal laws should not be violative of the fundamental rights. आपके फैमिली लॉ में 1986 में डैनियल लतीफ़ी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया था, मेंटेनेंस एज पर पर्सनल लॉ इज ओनली गिवन ओनली फॉर द इद्दत पीरियड ओनली. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था that it should be brought into the line of the 125 CRPC, and therefore the Muslims should also given unless she get married to someone else. इसलिए personal laws पे भी लगेगा that restriction, but only for clause 1 pre constitutional laws पे. So article 13 का ये वाला पार्ट तो लगेगा personal laws पर, but ये वाला पार्ट second part नहीं लगेगा. Anyway let's continue. ये article 13 वाला क्वेश्चन जनरली बीच में उठा लिया था. दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक. नाउ राइट डाउन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज.
दिस ऑल्सो केम्स इनटू यूपी मेंस। ये सारे टॉपिक्स मेंस में आ चुके हैं, ढंग से देखना इनको। Write down the fundamental duties has been added by the 42nd Amendment in 1976 in Article 51A. The purpose of the fundamental duties is to make the fundamental rights and DPSP more meaningful and effective. Fundamental duties are those constitutional duties which every citizen of India shall abide by. These duties provide in more comprehensive character to the fundamental rights and DPSP. However, Article 51A does not provide for a direct enforcement of the fundamental duties. Rather, the fundamental duties has to be enforced through legislation by making law through the state. So DPSP के लिए you have Article 37 which says that they are not enforceable, but you know that they can be enforced by making laws. Fundamental duties के लिए 51A is there, but they are not providing anywhere for any kind of enforcement. In fact, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए डायरेक्ट एनफोर्समेंट के लिए कहीं पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. So you have to understand that when fundamental duties are there, the state will make laws upon that, and that law will be providing for the enforcement of that particular duty. आगे लिखिए, the DPSP and fundamental duties are a tool to interpret the reasonable restriction upon the fundamental rights. The DPSP and fundamental duties are a tool. Tool means criteria to interpret the reasonable restriction upon the fundamental rights. So basically you see they are correlated like this. These three just put as three vertices of a triangle, and all these are seen to be together. देखो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भी लिखते, क्योंकि 1976 तक we are not having the fundamental duties expressly written into the constitution. So इसका मतलब ये तो नहीं है कि that the citizens are not having the fundamental duties. Earlier also they have the duties, but since they are not specified in the chapter 1 of part 5, so इधर से हमारा the union start हो जाता है chapter 1 part 5 से. उससे पहले the 4A, chapter 4A, part 4A, it was inserted as fundamental duties in 1976, but it was not earlier. Inserted in 42nd Amendment 1976 and came with effect from 3/1 of 1977. So basically जब ये पहले नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं था कि we are not having the fundamental duties. We are having the fundamental duties. For example, Wildlife Protection Act पहले भी था before this. So there are several laws, even though these fundamental duties are not there in constitution. तो ऐसे बहुत से law थे which are made upon these fundamental duties only. By inserting this, we just tell the having need of mentioning into the constitution so that the people directly should know that these are our fundamental duties. Now in schools also the fundamental duties are taught as a part of syllabus to the children so that they are aware of their duties. पढ़ाया तो सारा जाता है, fundamental rights, fundamental duties and DPSP भी पढ़ाया जाता है, but they are more focused on the fundamental duties. So from the initial classes the students are also taught to their duties, so they would grow up as a responsible citizen of India. So उनको बताया जाता है कि you not only having your rights, तुम्हारी कुछ duties भी हैं, और अगर duties ना हो then these two will become meaningless. अगर ये ना हो तो these two become useless. अगर ये ना हो तो these two become useless. So अगर duties ना हो तो these two become meaningless. अगर ये ना हो these two become purposeless. अगर ये ना हो then it become meaningless
and it becomes unattainable. Means they are playing a complementary role to each other. So they are making complementary role to each other. Means one provide a meaning, effect, and essence to the other. So that is the mutual interplay between the fundamental right, DPSP, and fundamental duties. So write down the three play a complementary role for each other, and each of them provides the other two with the essential meaning and essence and effectiveness. So you have to look duties इस तरह से देखोगे आप duties को जो jurisprudence का आपने अगर पढ़ा होगा तो right on one side you have right, duty is on other side. जहाँ right है वहाँ correspondent duty होगी. अगर मेरे पास right है तो आपकी correspondent duty होगी, आपके पास right है तो मेरी correspondent duty होगी. जो ड्यूरल कोरिलेटिव का चार्ट हॉफेंड का चार्ट है वो पढ़ा होगा आपने ऑन लायबिलिटी डिसेबिलिटी ऑल दैट. सो इन दिस वे इफ एक्स वाई इज हैविंग राइट देन एक्स इज करस्पॉन्डिंग ड्यूटी एंड इफ एक्स इज हैविंग राइट then duty is always a lie upon y. So it is vice versa. So if I am having right then you have the duties, but at the same time if you also having the same rights then I also have the corresponding duty. And in larger picture, without fulfilling our duty we cannot make our fundamental rights more effective. क्योंकि जब तक हम ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक फंडामेंटल राइट्स का रियल इफेक्ट कैसे आएगा. I said I have right to life and personal liberty, I have right to equality, but I am not fulfilling my duty towards others, so it is unjust. I have provided the rights and I am violating the others' rights, so it is inequitable and unjust also. And therefore you had to have corresponding duties upon every individual, and without fulfilling duties otherwise also attainment of DPSP is not possible unless we all perform certain acts or refrain from performing certain acts. The attainment of larger goals DPSP is not possible. And that is the essence of fundamental duties. For example, we talk about the sovereignty of India. The national flag is the symbol of the sovereignty, and me as an individual or you as an individual does not show respect to the national flag. So is it not what we are claiming as a larger right for ourselves or larger goal for ourselves? We ourselves are not fulfilling it. So the sanctity of the larger goal is lost. And therefore we need to fulfill our duties before we claim anything. For example, the government is providing as a matter of right of education different schemes like midday meal and providing the dresses, books, and scholarship to the students. And what the parents do, they make now admission into the government school of their children, and after that they take all the advantages of these kind of advantage, but they are not interested in not providing the environment at home to get to let them study. And sometimes they send the these children to schools and sometimes not. So are this when the government is providing the facilities on the fundamental rights of the children, then are the fundamental duties not arose on the side of the parents that they also cooperate? So it is not possible to enjoy the fundamental rights of a person until unless the fundamental duties of on the other side is not fulfilled. इसलिए अगर हम किसी चीज़ को राइट की तरह क्लेम करते हैं तो एक हमारी इस एक तरफ ड्यूटी होगी
उस राइट को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए हम भी कोई ड्यूटीज फुलफिल करें. So we shall ensure that our children should study. We shall ensure that our children go to school, and so on and so forth. So these kind of things, these kind of duties are put in Article 21A. So flag के ऊपर एक केस लिख लो. Union of India versus Navin Jindal and others, 2004 Supreme Court. In this, the point is that you are having Article 19(1)A, the freedom of speech and expression, and I have the right to freedom of speech and expression. So in that right, I also have right to show my pride towards my nation. अगर मुझे right to freedom of speech and expression है, तो क्या मुझे अपने देश के लिए अपना गर्व दर्शाने का अधिकार है? मान लो मैं राष्ट्रीय झंडा लेकर घूमना चाहता हूँ, या फिर राष्ट्रीय झंडा अपनी गाड़ी पर लगाना चाहता हूँ, या कहीं भी नेशनल फ्लैग लगाना चाहता हूँ, just to show my pride as the fact I am Indian and India is a sovereign nation, because this flag is symbol of Indian sovereignty. So can I do that? If I am having the right of freedom of speech and expression, then obviously I can do that. So देखा होगा आपने काफ़ी रैलियों में, प्रदर्शन में ये नेशनल फ्लैग लेकर घूमते हैं. अगर ये जजमेंट नहीं होता तो then it would be difficult. And therefore, if you are fulfilling certain things, then of course you can show your nationality, you can show your sovereignty by carrying the national flag. So कहीं आपने देखते होंगे कहीं कहीं ये in matches also somewhere when the Indian goes there they use the national flag. So why they do this? Because of we are having that right. So 19(1)A provide the freedom of speech and expression. We can do that, but 19(1)A is not absolute. You have got 19(2), means reasonable restriction will be there. And the Prevention of the National Honor Act, they clearly suggest that if you are hosting a flag, you should have follow some certain board of conduct. For example, after using the national flag, you cannot just throw it into the dustbin. If you do that, that is very, very unethical and unconstitutional. And you are violating the law and you can criminally prosecute it for that. So in this case, the Supreme Court held that the hosting of the flag is a matter of your right of speech and expression, and it is a manifestation of your sovereignty, the sovereignty of the nation. But at the same time, you also have the fundamental duties, and fundamental duties may respect for the national flag, national anthem, national song is there, and therefore you have to fulfill your duties towards the national flag if you want to host the right to host the national flag. So बहुत से लोग करते हैं कि झंडा ले आए और एक झंडा पोल में लगाकर लगा दिया अपनी छत पर या घर पे wherever, और वो काफ़ी दिन तक वो उधर ही रहने दिया, टंगा रहने दिया. उसके बाद धूल मट्टी बारिश इन सब में गंदा हो गया या फट गया कहीं से. So and not taking care of that, उसको उतारा नहीं, तो then you are using your right, but at the same time you are not doing your duty, and under the Prevention of the Insult of National Honor Act, you can be prosecuted and punished. That is what the court held in this case. If you are claiming your fundamental right, then you must fulfill your duties also. एक और केस था, नोट डाउन, बेजॉय मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 Supreme Court. In this case also the issue was the national anthem and duty towards the national anthem, and on the other hand the right to remain silent, which is implicit under Article 19(1)A. इस केस में 3 बच्चे थे and they are studying in a school.
There were three children in a school, and they belonged to a religion, and it is also related to Article 25, freedom of religion. In this case, they claim that in their religion, singing for anyone apart from their God is prohibited. अपने ईश्वर के अलावा किसी और के लिए गाना गाना is prohibited. And they are in the school, and in the morning in the school every day national anthem was sung. अब सारे बच्चे स्कूल असेंबली में खड़े होकर नेशनल एंथम गाते थे. ये बच्चे भी खड़े होते थे. They used to stand up, but they will not sing. So despite persuasions, they not ready to sing because they are religious not agree to allow them to sing, and therefore they expelled from the school. And ultimately this matter will goes to the Supreme Court. And in this case, the court held, on the one hand, you are having the right of freedom of religion, Article 25, and also the freedom of speech and expression, 19(1)(a). If I have a freedom of speech and expression, then I am also having to remain silent. अगर मुझे बोलने का अधिकार है 19(1)(a) में, तो वहीं पर मुझे राइट मिलता उसी से कि मैं साइलेंट रहूं. And number 2, I am having the freedom of religion. So in the light of these two perspectives, in the light of these two rights, these two children did have the right to remain silent, but at the same time they have the fundamental duty. The fundamental duty requires, when the national anthem is sung, you have to stand up, and if you are able to speak, then you must sing the national anthem. If you are able to stand up and sing. Sing का मतलब you will speak. You can murmur or speak. So these two things are in conflict. एक तरफ तो मैं राष्ट्रगान में भाग लूं और गाऊं, और दूसरी तरफ मेरा राइट कि मैं साइलेंट रह सकूं, और दूसरा मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन. द कोर्ट इन दिस केस हेल्ड there has to be a fair balance between these two, and the balance has to be circumstantial. There has to be a fair balance between these two, and the balance has to be circumstantial. You cannot make a universal kind of balance, a rigid kind of balance. Each and every case has to be seen in its own light, क्योंकि हर केस को उसके अपने तथ्यों के संदर्भ में देखा जाएगा. और इस केस में कोर्ट ने कहा कि actually their religion prohibits, and religion is also a fundamental right. The right to speak includes the right to remain silent. But अगर सिर्फ right to speech and right to remain silent होता, तो हम उनको कंपेल कर सकते थे. Because of the act of prevention of national honor act requires that. लेकिन चूंकि इनका freedom of religion भी है, and otherwise these children not showing any disrespect to the national flag. They stood every day, stood and respect every day, and did not do any kind of nuisance when the national anthem is sang, accepting that they did not murmur or sing by their lips. So in this case, the court held that since they are showing their respect by standing and participating in the national anthem, accepting that they are saying or murmuring themselves, so that is where they are not violating any law, and hence the expulsion is illegal. लेकिन यही काम अगर कोई और करे, जैसे राष्ट्रगान चल रहा है, सारे लोग खड़े हैं और एक स्टेट के गवर्नर साहब हैं, वो बैठे रह जाते हैं, और जैसे बीच में ही कुछ उनको याद आया राष्ट्रगान चल रहा है और वो चल दी वहां से. सो उसमें अगर कोई जानबूझकर करता है, अगर अनजाने में करता है कि कोई मेडिकल रीजन है या फिर सो गया कोई और तब चालू हुआ नेशनल एंथम, व्हाटएवर, तो उसमें इंटेंशन देखेगा कोर्ट, विल सी द इंटेंशन. बट अदरवाइज इफ इट इज इंटेंशनल, इट मे अमाउंट टू द insult to the national honor. So इस केस में तो the court was held that they were not insulting, and therefore the expulsion is invalid and illegal. So ये जो write down किया था आपने, this was held in this case Minerva Mills versus Union of India 1918 Supreme Court.
ये फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक इधर से चालू हुआ फ्रॉम हियर. सो दिस वाज हेल्ड इन द मिनर्वा मिल केस. यहाँ पर जो बताया था मैंने आपको दैट फंडामेंटल राइट्स टू बी कैन बी curtailed to a particular extent, that was held in Minerva Mills case. Anyway, we will write it separately what was held in Minerva Mills case. Before that, you will write another case, that is Rangnath Misra versus Union of India. Rangnath Misra versus Union of India 2003 Supreme Court. ये केस एज सच अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है. एक्चुअली इसमें जो जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी अबाउट द operationalization of fundamental duties, Justice J.S. Verma Committee about the operationalization of fundamental duties, इस कमेटी का जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के बेसिस पर रंगनाथ मिश्रा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव इशू किया था. कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से काम नहीं चलेगा. देयर हैज टू बी ए प्रॉपर एजुकेशन about the fundamental duties among the people, and various sources has to be engaged to that education process, including the media advertisement. तो टीवीज में कई बार ऐड की जगह आपकी ड्यूटीज दिखाते हैं बीच में. So these duties has to be taught to the people. There should be some special workshop held at the district level and the panchayat level. Train the people about their fundamental duties. क्योंकि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज आप फुलफिल नहीं करोगे तो अल्टीमेटली सफरर तो आप खुद होगे, नो मैटर्स हाउ मच द स्टेट वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कीम्स चली थी जैसे स्वच्छ भारत अभियान एंड ओपन डिफेक्शन फ्री एरियाज, तो उसके लिए जगह जगह टॉयलेट्स एंड अलॉट वगैरह करवाए थे, बनवाए गए थे. ऑल दीज स्कीम्स आर फॉर व्हाट? सो ओपन में डिफेक्शन ना करना, स्वच्छ भारत स्वच्छता का मिशन, तो ये सारे के सारे लोग उसको फॉलो करें या ना करें, बिकॉज ऑफ द पार्टी इशूज और डिफेंस इशूज अगर ना करें, दैट इज इरेशनल. सो ये जो भी प्रोग्राम बनाए गए, व्हाट इज दैट अबाउट? इन लॉन्गर रन में अगर हम सोचें दैट इट वुड अफेक्ट द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन, and after few days or several years it would become the habit of the citizens of India, the upcoming generation, to not make pollution. For at the same time, when we are talking about any missions, then we also have to give sufficient means. जैसे स्वच्छ भारत चलाया तो डस्टबिन्स भी होने चाहिए, स्वीपर्स वगैरह, ऑल दीज थिंग्स टू बी देयर, सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए. सो इट शुड बी मूव इन बोथ द डायरेक्शंस. गवर्नमेंट को भी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए और सिटीजन्स को भी अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए. So it is our duty to make the surroundings and environment clean. जैसे शौचालय के ऐड में जहाँ सोच वहाँ शौचालय, दैट वाज डन बाय विद्या बालन और अदर जैसे ये जो मूवमेंट्स हैं, इनके लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को अपॉइंट किया जा रहा है, या फिर सो दैट द पीपल बी अवेयर अबाउट दैट. इनको ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए बनाया जा रहा है अलग अलग मूवमेंट्स का. तो एक और ये जो खुले में शौच ना करने का अभियान चला था, इसमें एवरी सिटीजन इज हैविंग द ड्यूटी टू नॉट टू पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी, बिकॉज इससे जो अगर खुले में शौच करते हैं तो इससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं. सो ओपन डेफिकेशन इज हार्मफुल टू अदर पर्सन्स ऑल्सो. जो भी आसपास रहते हैं या फिर आने जाने वाले लोग, इट वुड हार्मफुल टू अदर्स. सिमिलरली जो डॉग्स वगैरह पालते हैं, दे ऑल्सो डू द सच काइंड ऑफ थिंग्स. द पार्क में या फिर सड़क पर, एनीवेयर दे अलाउड टू सेट देयर डॉग, दैट विल ऑल्सो pollute the environment. But in outside countries there are several countries where they are providing certain facility for
these things for defecation of dogs only. So in several countries they are providing some polythene bags or वहाँ रहेगा for that. You have to clean that if you are having a dog. And then it is your duty only to take care of your pets and make notice that they will not harm in any way to others. But in India, the culture is not that much developed. So openly, persons are allowing their pets to do that. But it does not mean that we not move forward towards that kind of stage. So when we are talking about the duties of the defecation of the human beings, then we also talk about the animals, their pets also. And if the people not follow that, then the state can make the law for the criminalization for that, and so forth. So we are talking about it is basically about the education of the people about their duties regarding the fundamental duties, and that you can do by putting chapters in the schools, that you can do by supporting by uh, organizing a special workshop, special TV programs on TV channels or whatever, and that may educate people about their fundamental duties and also tell them laws about that in that regard, and what will be the consequence if they are found to be violating their fundamental duties. So that is about education, that what this committee have suggested, and that is what Supreme Court in Rangnath Misra case has suggested, that you must have a proper effective mechanism of educating the people about the fundamental duties and the importance of the fundamental duties, and also the action can be taken against them if they violate the fundamental duties. Now let's see what are the fundamental duties. It shall be the duty of every citizen of India. Shall be means what? Mandatory. To abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. To abide by the constitution and respect its ideals and institutions. What is meant by ideals? The philosophies, the philosophies, the principles, जिस बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वही तो है. The values of the constitution: equality, social justice, secularism. These all are the ideals of the Indian constitution, and they have to be respected by the citizens, and it is the fundamental duties of the citizen. Apart from respecting the national flag and national anthem, you also have to respect these principles and ideals of the constitution, and not only that, the institution of the constitution that is institution which created by the constitution. Talk about the parliament, any such institution which has been created by the constitution, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किए हैं उनको भी रेस्पेक्ट करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. सो हम अगर कोई एंटी सेक्युलर एक्टिविटी करते हैं, देन वी आर रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एक्चुअली रेस्पेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है. रेस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज ऑल्सो आवर फंडामेंटल ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल खाप पंचायत वगैरह है उसमें सम्मिलित होना, एंड ऑल दैट, दीज आर ऑल्सो showing disrespect towards the ideals of the constitution, even though you are not directly involved in the offense. आगे देखिए अब आप. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. So noble ideals again those principles. सोशो-इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं, बिकॉज that is what inspired the freedom struggle movement, and that is larger goals of socio-economic. So that is what we have to be in respect. तो उन सोशो-इकोनॉमिक लार्जर गोल्स को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. Then to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Then to defend the country and render national service when called upon to do so.
सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आवश्यकता पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो हम सबको सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा सकता है। अब उसमें एज ग्रुप होगा, कितने एज से कितने एज तक के लोगों को दैट आर ड्यूटी बाउंड टू गो इनटू द फोर्सेज इफ इट इज़ नेसेसरी। हो सकता है कि अगर आर्म्ड फोर्स डेप्लॉयड है बॉर्डर्स पर और डोमेस्टिक प्रोटेक्शन की अगर कोई ज़रूरत है, देन यू कैन बी डेप्लॉयड देयर। आपको 10 दिन का ट्रेनिंग दिया, बंदूक पकड़ा दिया और पहुंचा दिया बॉर्डर पर, दे कैन डू दैट। स्विट्जरलैंड में एवरी पर्सन इज ट्रेंड। अब इज तो इज अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, but every person is part of the army and every individual is given a weapon, but there the population size is very less. अब इंडिया में the circumstances are not that much fit, तो यहाँ पर अगर weapons दे दिए सबको तो there is more danger. So first for these kind of situation, physical situations, first mental training is more important than in any country. Then, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. So, उस तरीके से जितने भी हेरिटेज हैं कंट्री के या रिच इन हेरिटेज, जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, they have to be protected by us, and we cannot do any act which goes to harm the monuments. In that case, we can be legally prosecuted. So, to value and preserve the rich heritage of composite culture, to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, then to safeguard public property and to abjure violence, then to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels. Then last they are talking about education, who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his child, or as the case may be, ward between age of 6 and 14 years. अब यहाँ पे यू विल फाइंड दैट ये सब क्लाउजेज ज़्यादातर DPSP से रिलेटेड हैं। आप DPSP से इनको कोरिलेट करने की कोशिश करना, बहुत सारे क्लाउजेज आपको DPSP में भी मिलेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो जो हमारे राइट्स हैं उन्हीं को करने की हमारी ड्यूटी भी है। जैसे इफ़ वी आर क्लेमिंग environment, pollution free environment, then it is also our duty to not to create pollution, and so forth. So now come to Minerva Mills. समझ लिया था हमने, देख लिए तो मेन पॉइंट्स तो देख लिए थे। राइट डाउन वन मोर पॉइंट ऑन दिस। Minerva Mills versus Union of India 1918 Supreme Court. Write down. In this case, it was held that in the case of a conflict between one fundamental right and some DPSP, taking into account the importance of that DPSP, the fundamental right can be restricted to a reasonable extent, but generally to declare that all the DPSP are superior to fundamental rights, and any law made for any DPSP will not be void, even if violates the fundamental right, would be improper. A general conflict between all DPSP and all fundamental rights cannot be read. मीन्स आप जनरली कन्फ्लिक्ट इन दोनों में नहीं रीड कर सकते। जब कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आएगा तब वहाँ पर आप बैलेंसिंग करोगे, लेकिन जनरली ये कह देना कि कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा और मात्र इस वजह से DPSP को ओवरराइडिंग पोजीशन दे देना, दैट इज नॉट पॉसिबल। द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन टू इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and is a part of basic structure. Accordingly, the 42nd Amendment, which amended the 31C, is declared to be unconstitutional. Article 31C was declared unconstitutional. Accordingly, the 42nd Amendment, which amended
the 31C was declared to be unconstitutional. So this topic is over. That's it for this topic and this class also. Thank you for watching this class.